जुलाई 2021 का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। तो जो कि पहला आर्टिकल्स है वो रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री क्लीन रूल फॉर वेंचर कार, ठीक है, विंटेज कार। फिर उसके बाद सेकंड आर्टिकल है चाइना स्टार्ट्स लॉन्ग अवेटिंग कार्बन ट्रेड स्कीम्स। थर्ड है तुम्हारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश इन जलगांव वांटेड। फोर्थ है तुम्हारा इंडिया नीड अ रिन्यूड हेल्थ केयर सिस्टम्स। फिफ्थ है ओवरड्यू रिव्यू। सिक्स्थ है डोंट सीक सरेंडर ऑफ दोज ऑन इंटरिम बिल, सुप्रीम कोर्ट टेल्स स्टेट्स। फिर उसके बाद सेवेंथ है फार्मर फ्रंट इशू विप टू द MPs। एट है तुम्हारा नो वर्क ऑन मेकाडेटू मेकाडेटू सैंक्शन मिलेगा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा तभी वर्क होगा, ठीक है। नाइन्थ है तुम्हारा टाइम टू ब्रेव स्ट्रेंथ फिजिकल डिफिसिट गोल टू नीड बी कामत। लास्ट में प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और फिर मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो बोल रहा है मिनिस्ट्री क्लियर्स रूल फॉर द विंटेज कार, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है GS पेपर 3-2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर। तो न्यूज़ क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट आई मीन सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 स्पेशल provision for the registration of vintage motor vehicles. The Motor Vehicle Act 1988, Principal Act for regulating all the activities related to the motor vehicles in India. Several amendments to adapt to the technological upgrade emerging in the road transport passage visit movement etc. बोल रहा है कि द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 reform in road safety bring citizen facilitations transparencies and reduce corruption। एम क्या है कि strengthen the public transport safeguard and protect the government Samaritan and reform the insurance and compensations regime, involve in innovations and new technology like driverless vehicles to be tested in a live environment, increase efficiency in research, facilitates Divyang allows motor vehicles to be converted to adapted vehicles with post facto approval. Road safety provisions and penalties facilitates electronics monitoring of vehicles for enforcing traffic rules, refresh training course to obtain the DL after its supervisions or revocations, penalties for new offence and enhanced for the existing offence. Example: offence committed by the juveniles, penalties of ₹25,000 and imprison up to the 3 years for the owner's guardian. Constitute a national road safety board to render the advice on the road safety and traffic management. Focus on digital intermediaries and
aggregators such as Ola and Uber's aggregators are digital intermediary marketplace for the passengers to connect with the drivers for the purpose of transportation. They can be uh, they can be penalized for the offenses breach of data privacy under the IT Act. Focus on preventing the misuse of personal data of consumers, uh, consumer debit cards, details, UPI numbers, phone numbers, etc. Citizen facility transparency and reductions in corruptions. All for all forms, fees, and documents can be now submitted online to avoid human interventions. Intervention dealers point registrations for registration of new motor vehicles owns to apply for the registration shifted to dealer requirements to provide vehicles before authority was removed. So चेस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 discuss the impact on the cab aggregators platforms such as Ola and Uber. फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द चाइना स्टार्ट लॉन्ग अवेटेड कार्बन ट्रेडिंग स्कीम्स. सो इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंडर द ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इफेक्ट्स पॉलिसीज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंडर द कंजर्वेशन एनवायरमेंट पॉल्यूशन. सो कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कार्बन ट्रेडिंग है कि प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द क्रेडिट्स permit a company or other entities to emit a certain amount of the carbon dioxide. Carbon credits and the carbon trades authorized by the government goal reducing overall carbon emissions and mitigations its contributions to climate changes. Carbon trade originated with the Kyoto protocols. Functioning carbon trade क्या है कि nations certain number of permits to emit carbon dioxide up to a certain levels. It does not use up all of its permits. Sell the unused permit to another nations that wants to emit more carbon dioxide than it permits allows. Every year a slightly a small number of new permits is awarded to each nation. Basic idea to incentivize each nation to cut back on its carbon emissions in order to have the leftover permits to sell. Cap and trade systems. Variations in the carbon trade systems. Trade क्या है कि authorized and regulated by the government conducted between the companies. Each company is given a maximum carbon pollution allowances. Used allowances can be sold to other companies. Idea क्या है कि ensure that the company in the aggregates do not exceed a baseline levels of pollution. Baseline will be reduced annually. चाइना क्या बोल रहा है कि नेशनल कार्बन ट्रेडिंग स्कीम वर्ल्ड्स टॉप ग्रीन हाउस गैस इमिटर्स emissions trading schemes
part of the China plans to use market mechanisms to help bringing emissions to peak before 2030 to net zero by 2060. चाइना क्या बोला है कि try to put a price on a carbon by setting up pilot carbon emissions exchange. बेजिंग, शंघाई और गोंगडोंग, हुबेई, शिनजियांग ये सब तुम्हारा इसके लिए मतलब कि बोला है। ठीक है, फर्स्ट फेज में क्या कहा है कि कवर 2225 पावर प्लांट्स। पावर sector contribute more than the third of its total carbon emissions. Thermal fired power plants account for more than 60% of the China total power capacity. Allocations of permits carbon intensities or the amount of emissions per unit of power generation। ठीक है, ये है। अब इससे रिलेटेड एक मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल प्लेड बाय द कार्बन ट्रेडिंग in the driving down the greenhouse gas। अब नेक्स्ट आर्टिकल्स है अबाउट द ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश इन जलगांव, 1 डेड। ठीक है, तो DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, जो कि ऑपरेट करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, principal regulators authorities in the field of civil aviation, headed by the Director General of Civil Aviation. The Directorate has its headquarters in New Delhi. Function क्या है? Responsible for regulation of the air transport service to and from India and within India. Responsible for formulation of the enforcement of a civil air regulations, air safety and worthiness standards. Provide for registrations of a civil aircraft. Grant certificate of airworthiness to the civil aircraft. Provide license to the pilot and the aircraft maintenance engineer. Grant certification to the airworthiness of the civil aircraft. Provide for the registration of the civil aircraft and responsible for formulation and enforcement of the civil aircraft registration ठीक है, civil aircraft regulation, air safety and worthiness standard। अब process amendment to the Aircraft Act 1934 and the Aircraft Rule 1937 implements the provision of the Chicago Convention. The Convention on the International Civil Aviation was signed at Chicago on 7 December 1944, entered into the force on 4th April 1947, based on the provisions of a convention. International Civil Aviation Organizations came into being on 4th April 1947, became a specialized agency of the United Nations linked to the Economic and Social Council। ठीक है, the DGCA coordinate all regulatory functions with the International Civil Aviation Organization. Investigate air accidents and incidents and give a technical advice to the court or the committees of inquiries। अब इससे रिलेटेड एक प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि consider the following statement with reference to the International Civil Aviation Organization। पहला है कि it is a specialized agencies of the United Nations, Civil Aviation Organization specialized agency है United Nations का। All regulatory function with the
International Civil Aviation Organizations in India is coordinated by the DGCI, मतलब कि डायरेक्टर जनरल DGCI का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन विच इज कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर नहीं आता है। तो करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली वन करेक्ट होगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द इंडिया नीड रिन्यूड हेल्थ केयर सिस्टम्स। अब इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंडर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी से issues relating to the development and the management of the social sector service related to the health। अब नीति आयोग डॉक्यूमेंट बोला है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर प्रमोट फर्दर प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, explore the pandemic as a business opportunity for the health industries to grow। ऑथर बोला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इनहांस गवर्नमेंट रोल इन द हेल्थ डिलीवरी सर्विस। स्टोरी ऑफ द टू स्टेट्स केरला एंड महाराष्ट्र कंपेरिजन। बोथ इज द बिग स्टेट comparable state GDP। Kerala COVID mortality is 0.48% and Maharashtra COVID mortality is 2%. Reason: huge difference in the effectiveness of the public health system. Kerala has more government doctors compared to the Maharashtra. Kerala also have the highest proportion of the government hospital bed. Kerala allocates over 1.5 times higher funds on a public health every year in per capita terms compared to the Maharashtra. Weak public health systems has provided to be the critical deficiencies. Clear message: neglect of a public health system means a large scale avoidable losses of lives। लेक्यूनास इन द हेल्थ केयर सिस्टम, क्या क्या लेक्यूना है? तो रिसोर्स एलोकेशंस जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ could be utilized for setting up of oxygen plant. Numerous life would have been saved। Paltry allocations for national urban health, last time allocations rupees 1,000 crores amount to rupees 2 per individual per month। Parliamentary standing committees suggested allocating 1.6 lakh crores for the public health during this current years, almost doubling of present center's health budgets। To regulate the private players in a health sectors, high pricing COVID-19 cares of an cost of 1 lakh to 3 lakhs per week in a large private hospitals, massive hospital billing, untold distress even among the middle class, unregulated drug use। Example: drug remdesivir was used in COVID patients without valid evidence on the efficiencies। Indiscriminate use of the steroid accumulated mucormycosis infection। mucormycosis
Effective implementation of the Clinical Establishment Act जो बोला है only 11 states have implemented it. Effective implementation of Clinical Establishment Registration and Regulation Act not effectively implemented due to a major delay in notifications of a central minimum standard and failures to develop the central framework for regulations of rates. In essence, need to regulate the private hospitals and invest more in public health. अब इस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में कि इंडिया हेल्थ सिस्टम नीड urgent policy change. Explain it in the context of the need to enhance public spending towards the government health facilities. नेक्स्ट आर्टिकल है ओवरड्यू रिव्यू. अब इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट पॉलिसीज इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस. तो सेडिशन जो होता है जो कि ऑफेंस रिलेटेड टू द conduct or speech that is inciting the people or to rebel against the authorities of the state or the government. Punishable under the section of 124A of IPC 1860. Sedition inserted in IPC in 1870 intended of the seditions to punish an act of exciting feelings of disaffection towards the government, with disaffections being distinguished from disapprobations. Differentiations importance for fairly voicing feelings against the government as long as they obey the government lawful authorities. ठीक है. तो सेडिशन इंडियन पेनल कोड में 1860 में डाला गया, 1817 में डाला गया. सेडिशन इंडियन पेनल कोड 1860 में बना था. ठीक है. 1816 में इंडियन पेनल कोड बना था और 1817 में ये डाला गया sedition. Issue with the sedition loss convictions rate under the section 124A IPC. Failure to convict due to the lack of evidence. Vague definitions, especially of the terms disaffections, and difficult to differentiate disaffection and disapprobations, lead to simple criticism being constituted seditions. Surprising dissents affects fundamental right of freedom of speech. Free speech, most significant principles of democracy, human right, liberties, yardsticks used for the distinguishing harm is too high. फिर उसके बाद reality, both provocations and innocuous speech and writings treat as same. Judicial interpretations enables it to be the continue. Kedarnath Singh versus State of Bihar in 1962. Supreme Court attempted an attenuated interpretations of the provision, upheld the validity of a section 124A
not citizens, as long as criticisms or comment of citizens does not incite people to violence against the government established by the law or with the intentions of creating public disorders. Public disorder considered to be a necessary ingredients of section 124A IPC by the court. ऑथर बोल रहा है कि listened the severities of the sections restriction imposed on a free speech could not be declared unconstitutional. ठीक है, मिसयूज हो रहा है ये सेडिशन एक्ट का 124 आईपीसी 124 ए है ना 124 ए सेडिशन 1870 में आ गया था। इंडियन पिनल कोड 1860 में डाला गया था। ठीक है, तो मिसयूज क्या हो रहा है कि क्रिमिनलाइजिंग द स्टूडेंट पॉलिटिकल criticisms and accused as being anti-nationals. Three political reasons to suppress the criticism and protect against a particular policies project of a government to criticize to criminalizing dissenting opinion of the right difference lawyers activities and journalism to settle पॉलिटिकल स्कोर। ठीक है, तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिकेटेड देयर इंटेंशंस टू reconsider the sedition provision might lead to the new guidelines and safeguard for using sedition 124A meticulously. कंक्लूजन बोल रहा है कि सेडिशन 124A शुड बी स्ट्रक डाउन। इससे रिलेटेड जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट सेडिशन लॉ इज indiscriminately used by the state as a punitive laws to impose serious burdens on a free speech. In view of above discussed the constitutional validity of the sedition law. Don't seek surrenders for those on an interim bail, Supreme Court tells state. ठीक है, तो वही है कि बहुत ज़्यादा जेल में मतलब कि गैदरिंग नहीं करना है। ठीक है, तो मेजर टेकन टू डिकंजेस्ट द प्रिजन, कंजेस्टेड नहीं करना है। ठीक है, तो जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है नालसा, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1995 में, स्टैट्यूटरी बॉडी है कंस्टिट्यूट अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। एम क्या है? टू प्रोवाइड अ फ्री लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत, और ऑर्गेनाइज करता है लोक अदालत को, और लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। ठीक है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ main function on the regulation is to provide free and competent legal service to the eligible person, to organize the lok adalat for amicable settlements of disputes, to organize a legal awareness camp in the rural area.
अब पहले में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री लीगल एड इज द इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड इन इट्स डीपीएसपी आर्टिकल 39A में सॉरी। अब एक 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन इंडिया द लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस, जो कि 1995 में स्टैट्यूटरी बॉडी है, to which of the following type of citizen? A person with an annual income less than the 1 लाख, हाँ बिल्कुल उसको लीगल प्रोवाइड करेगा कि 1 लाख से कम ही है उसका एनुअल इनकम, तो कहाँ से वो पैसा पे करेगा। ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, हाँ ट्रांसजेंडर को तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो 2 लाख, हाँ सही है। फिर मेंबर ऑफ ओबीसी विच इज एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ओबीसी का 3 लाख नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा ओबीसी है, ठीक है। 50% आबादी तो ओबीसी ही है, ठीक है। तो ऑल सीनियर सिटीजन, ऑल वाला तो स्टेटमेंट गलत ही होता है, ठीक है। तो 4 हटा दो, तो या तो ए या सी से होगा, तो 1 and 2 करेक्ट है, तो ए के साथ जाना चाहिए। फार्मर फ्रंट इशूज विप टू द एमपीज। विप क्या होता है कि विप होता है कि इन अ पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट विप आर ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अब विप जारी होता है, विप 3 तरह का विप होता है, जिसमें ऑल पार्टी को एक पर्टिकुलर लाइन में मतलब कि वोटिंग करना है या करना है, ठीक है। Importance of the whip based on the number of the times an order is underlined. वन लाइन whip जो होता है वो underline one issues to inform party member of a vote allow them to abstain in case they decide not to follow the party lines. 2 line whip जो होता है वो direct them to be present during the vote. एंड 3 लाइन जो whip होता है to the strong whip होता है अंडर द इम्पोर्टेंट ओकेजन, सेकेंड रीडिंग्स ऑफ अ बिल और नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये जारी होता है, ठीक है। प्लेस एंड ऑब्लिगेशंस ऑन अ मेंबर टू ओबे द पार्टी लाइन्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में कि थ्रू द whip directions is justified to the maintain parliamentary ethics. In many cases it create gap or gap orders on a parliamentary rights to speeches critically analyze, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल्स अबाउट द नो वर्क ऑन मेकाडोटू से CW कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, ठीक है। तो मेकाडोटू प्रोजेक्ट जो कि कावेरी नदी पर बन रहा है, कर्नाटका के द्वारा बनाया जा रहा है। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर यूनिलैटरली अनाउंस अबाउट दिस प्लान to go forward with a long pending मेकाडोटू प्रोजेक्ट। प्रेजेंट क्या बोला है कि सेंटर एश्योर दैट कर्नाटका विल नॉट बी अलाउड टू कैरी आउट एनी constructions on the Mekadatu Dam projects on the Kaveri River until the details project reports is approved by the Kaveri Water Management Authority, ठीक है। तो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो कि 1956 के द्वारा सेक्शन 6A में बोला गया है कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन सा आर्टिकल डील करता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो आर्टिकल 262 या 362 नहीं 262 में डील करता है, ठीक है। आर्टिकल याद रखें 262 डील करता है कि डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वाटर्स ऑफ द इंटरस्टेट रिवर्स। 261 तो पता ही है तुमको कि इंटरस्टेट कौन सा।
ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट होता है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और पौंडीचेरी के बीच में रहता है। ठीक है, ठीक है, और कुछ तो खास इसमें नहीं है, वही कुछ खास नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम में क्या पूछा जा सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो पहला बोल रहा है कि इट एड्रेस द डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर अमॉन्ग द तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश नहीं रहता है, इसमें कर्नाटका है, पौंडीचेरी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का डाल दो, यानी कि गलत हो गया स्टेटमेंट। सेकेंड ऑप्शन है इट डिटरमाइंस द टोटल रेसिडुअल स्टोरेज इन द स्पेसिफाइड रिजर्वायर्स एट द बिगनिंग ऑफ द वाटर ईयर। बिल्कुल सही है, यही तो इसका काम ही है। It function under the Ministry of Water Resource River Development and Ganga Rejuvenation है। ये जो वर्क करता है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत में करता है। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो 1 और 3 इनकरेक्ट हो गया, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है articles about the time to be brave, stretch fiscal deficit goal if needed, be कामत की भी कामत बोला है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट जो होता है, डेफिसिट स्पेंड ग्रेटर देन द अर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट वैल्यूज इन अ गवर्नमेंट बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज। Fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipt except the borrowing and liabilities. Except the borrowing and the liabilities. Total receipt except the borrowing and the liabilities. To infuse the fiscal disciplines, the Fiscal Responsibilities and the Budget Management Act (FRBM) Act 2003. Central needed to limit the fiscal deficit to 3% of the country gross domestic product (GDP) of the March। ठीक है, ये गवर्नमेंट टारगेट किया है डेफिसिट 6.8% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025 बजट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो कि विथ रेफरेंस टू द फिजिकल डेफिसिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिजिकल डेफिसिट ऑलवेज बैड फॉर, नहीं बैड नहीं होता, गुड होता है, गुड भी होता है। फिजिकल FRBM, फिजिकल FRBM का क्या फुल फॉर्म था? फिजिकल FRBM फुल फॉर्म क्या था? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट strives to infuse the fiscal discipline and fiscal क्या था? Fiscal Responsibility and Budget Management. Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 adopt a target-based approach. बिल्कुल सही है। +2 4 ± 2 4 ± 2। ठीक है, 3 ± 2 होता है ना, 3%। 4 ± 2 होता है। ठीक, तो करेक्ट पूछ रहा है तो 2 और 3 करेक्ट है, तो सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हो गया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।